as I said last time, it's just another game of cricket tomorrow, and whatever the result, we have to go forward and play more games after that. So the more relaxed you stay in these kind of situations, it's a good thing, because it helps you take better decisions when you're composed and calm mentally, and you can help the team, come out of difficult situations only if you're thinking in that fashion. So we've changed nothing from the first day we came here, honestly. Not looking to change too many things, because I've said this before, I would any day back a guy like Hardik, who provides you so much balance in conditions that he can be effective as a bowler, and his batting is priceless. I mean, if you're chasing a total and you need 8 and over and you've lost wickets, here's a guy who can still win you the game. That's the kind of belief he has in his ability, and we have that belief in him. So he can give you a match-winning performance in any game that he plays. I don't see any relevance of the first game here, because you can never tell how a particular team starts a tournament. Some teams start very confidently and then they fade off. Some teams might not have the best starts and they come back amazingly, which Pakistan has done. So everyone is aware of the kind of talent they have in their team, and on their day they can beat any side in the world. That's the kind of players they have, and that's the kind of ability they have in their side. So we're quite aware of that. तो जहाँ तक आपने बात की कि देखें, हम लोग अटैकिंग ही खेलते हुए आ रहे हैं इंडिया के मैच के बाद से। जैसा कि हमने क्रिकेट खेली, बॉलिंग में भी माशाल्लाह से हमने अटैक किया ही तो विकेटें ली हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि बैटिंग की, देखें बैटिंग भी हमारी माशाल्लाह से फॉर्म में आ गई। पिछले मैच में जितने भी हमारे मिडिल ऑर्डर्स थे, हफीज़ भाई हो गए, बाबर हो गए, अजय अली हो गए, फ़खर, तो माशाल्लाह कि हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि हम अटैक करके खेलें, क्योंकि जितनी पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो यही कोशिश है कि जिस तरह खेलते हुए आ रहे हैं उसी मोमेंटम को बरकरार रखें और वही मोमेंटम लेके फाइनल में लेके जाएं। रोमान जो खेले थे वो आमिर के अनफिट होने की वजह से खेले थे। तो देखें, इस वक्त आमिर भी बिल्कुल फिट है मैच खेलने के लिए। अब जो भी हमें बेहतर लगेगा उसके मुताबिक हम अपनी टीम खिलाएंगे। और जहाँ तक आपने बात की, अब ये तो उनकी अपनी जाती राय है, वो ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में, लेकिन हम लोग इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे।